अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नंबर 2, ना जादू को सच मानने वाला। नंबर 3, ना हमेशा शराब पीने वाला। नंबर 4, ना तकदीर का इनकार करने वाला। யார் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள்? நபி தோழர் அபூ தர்தா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார், நபிநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், பெற்றோருக்கு மாறு செய்பவன், சூனியத்தை உண்மை என்று நம்புபவன், நிரந்தரமாக மது அருந்துபவன், விதியை மறுப்பவன் ஆகியோர் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள். இந்த நபிமொழி முஸ்னத் அஹ்மதில் உள்ளது. Hazrat Abu Darda narrated that the Holy Prophet ﷺ said, number 1, those who disobey their parents. Number 2, who will use sorcery and black magic. Number 3, permanent drunkard. Number 4, who refuse faith will not be allowed in paradise. This hadith from Musnad Ahmad. Assalamu alaikum.